Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई आ MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक करदेव और चैनल को सब्सक्राइब करदेव यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन बेल आइकन को ये ऑल सेट करदेव तापर वीडियोज क्लारिटी बढ़ाई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे हमें आइजन वैल्यूज आइजन वेक्टर्स आउ सेक्युलर इक्वेशन विषय रे पढिबा सेक्युलर इक्वेशन को हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मध्य कहि परिबा इन केस ऑफ योर मैट्रिक्स so for this purpose let us consider a linear transformation of the form ax equal to lambda x एठी lambda हे गला गोटे स्केलर a होची गोटे nth ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स so obviously ए जो ax देखा को पाउचो only effect of this matrix A on the vector x is to multiply it simply by a constant scalar factor that is lambda. Okay, so a vector x which is defined by this equation 1 is called as an invariant vector under the linear transformation. Okay, and equation 1 जो अछि याको हमें ए भली भी लिखि परिबा a minus lambda I into x equal to 0 where I is the unit matrix, right? So any value of lambda for which equation 1 आउ जो 2 देखिला will have a non-zero solution that is x not equal to 0 then आमे सेई lambda रो value को कहिबा eigen value or characteristic root or latent root of the matrix A generally eigen value कहा जाए and the corresponding non-zero solution which is x is called as the eigenvector or characteristic vector or latent vector of the matrix A corresponding to that value of lambda. Okay, so एठी जो matrix रहउची हमर A minus lambda I याकू कहिबा हमें characteristic matrix of the original matrix A. Okay, आउ determinant जो हैला एठी phi lambda which is equal to A minus lambda I यार determinant या कहिबा characteristic polynomial of A. Okay, so the system of homogeneous equations equation 1 आउ 2 has non-trivial solution or non-trivial equation if and only if a minus lambda I is singular singular माने यार determinant टा निहाती भाबरे equal to 0 हवा कथा or it is equivalent to phi lambda equal to a0 plus a1 lambda plus a2 lambda square and so on up to a n lambda n माने जेति की ऑर्डर रो से मैट्रिक्स बा स्क्वायर मैट्रिक्स टा ओके इट्स वैल्यू ए जो लीनियर कॉम्बिनेशन रो शुड बी इक्वल टू 0 where age माने a0 a1 a2 up to an are functions of the elements of A. Okay, matrix A, right? So equation 3a out 3b, okay, these two equations will be called as the characteristic equation or जेमती कहली secular equation of the original matrix A. Okay, so from equation 3 okay एठी गोटे जिंस हां एटा प्रिंटिंग मिस्टेक अछि this should be 3. So from equation 3 it follows that every characteristic root lambda of the matrix A is a root of its characteristic equation. So we will have n number of roots here in this case lambda 1 lambda 2 up to lambda n of the characteristic equation which are not necessarily all different. Okay, मन रख जदियो n संख्यक रूट बाहरिबो किंतु सबु जाक रूट निहाती भाबरे जे सबु रूट डिफरेंट बा अलगा हेतबो एमती किछि माने नाही. ओके, सो केतेरा प्रॉब्लम सॉल्व करले हमें याकू बेटर बुझी परिबा. ओके, देखो एठी फर्स्ट प्रॉब्लम एग्जांपल नंबर 31 एठी कहूची find the characteristic equations of the given matrix. Okay, this is our matrix and also find the eigenvalues. Okay, so characteristic equation किछि नै a minus lambda I determinant बाहर करिवो इक्वेट करिवो 0 सहित. Okay,
this is our matrix, it is lambda, then your unit matrix where the diagonal elements are 1 1 1 and the off diagonal elements are 0. Okay, याकू सॉल्व करिले देखिबो तमरो जो वैल्यू जाकू इक्वेट करिवो 0 सहित. ओके, सो तीनटा वैल्यू आसीबो लैम्बडा रो. ओके, जेमती कहले देखो 1 1 4 तीनटा वैल्यू आसिले भी ऑल आर नॉट डिफरेंट, एठी 1 1 समान आसुची. ओके, सो कहि पारो एटा डिजेनेरेसी देखौची. ओके, सो आइजेन वैल्यूज जदि कहबा ए मैट्रिक्स रो आसीगला एठी 1 1 4. ओके, तापरे नेक्स्ट प्रॉब्लम, find the eigenvalues and normalized eigenvectors of the matrix. एठी मैट्रिक्स दे देला हमरो, तापरे एठी हमरो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पुट करिबा. ओके, we find the value of lambda by equating the characteristic equation to be equal to 0. ताले देखो एठी अगेन डिजेनेरेसी देखेला -1 किंतु तापरे 1 1 दुइटा समान आछी. ओके, दिस इज अ डिजेनेरेट केस. ओके, दिस शुड बी ए. से जा भी हो ताले आइजेन वैल्यू इक्वेशन, एबे आइजेन वैल्यू इक्वेशन जदि आमे देखिबा ताले एटा आछी राइट, माने जो लैम्बडा रो तमे तीनटा वैल्यू पाइलो ताकू पुट करा हैला. ओके, सो आइजेन वैल्यू इक्वेशन जोटा आमे ऊपर फर्स्ट पढ़ला बेल को भी देखुतिला ताकू पुट करिबा. देन वी पुट द वैल्यू ऑफ x टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स. जेतु तीनी ऑर्डर रो अछि स्क्वायर मैट्रिक्स, सो एठी गुटे कॉलम मैट्रिक्स हैविंग 3 elements like this x1 x2 x3. now for lambda equal to -1 आगो lambda रो वैल्यू -1 जो रूट पाइथिला हमें ताकू पुट करिबा. ओके, ए जगह रे and we try to solve it in order to find the value of x1 x2 and x3. ओके, सो एठी हमरो x1 रो वैल्यू आसीगला 0, तापरे x2 plus x3 equal to 0. ताले हमें गुटे सुइटेबल normalized eigenvector पाई परिबा x1. okay, x1 माने this is for the case of the first root, that is lambda equal to -1. so यार वैल्यू आसिला 0 1 by root 2 then -1 by root 2. okay, तापरे for lambda equal to 1 जोटा कि डिजेनेरेसी देखौची आमे एठी पुट कला, देन याकू आमे सॉल्व करिबा so that एठी x3 minus x2 equal to 0 हबो. ओके, बट याकू छाड़ी कि आउ किछि भी इंफॉर्मेशन एठी अवेलेबल नहीं. दैट मीन्स we are left with infinite number of possibilities or choices. so किछरा possible choice हमें एही हिसाब रे नबा in order to find the value of x2 and x3. ओके, x2 को हमें एही हिसाब रे लिखि परिबा 0 1 by root 2 minus 1 by root 2. similarly x3 को लिखि परिबा 1 0 0 जोटा कि सेटिस्फाई करूची एई इक्वेशन को. ओके, सो नॉर्मलाइज्ड आइजेनवेक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स अकॉर्डिंगली x1 x2 x3 हमें पाई गला. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जांपल नंबर 33. एटी कहूची फाइंड द आइजेन वैल्यूज एंड नॉर्मलाइज्ड आइजेनवेक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. ओके, सो दिस इज आवर मैट्रिक्स. सो अकॉर्डिंगली हमें फर्स्ट एठी यार कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए हिसाब रे लिखिबा, इक्वेट करिबा 0 सहित. वेरी सिंपल यार जो सॉल्विंग मेथड टा अछि. आफ्टर इक्वेटिंग टू 0 वी कैलकुलेट फॉर द रूट्स. तीनटा वैल्यू लैम्बडा रो देखो एठी डिस्टिंक्ट आछि बा डिफरेंट आछि 0 1 2 तीनटा जाको अलगा आसिला. ओके, सो आइजेन वैल्यूज ए मैट्रिक्स पई आसीगला 0 1 2. तापर आइजेन वैल्यू इक्वेशन जोटा कि a minus lambda I x equal to 0. ओके, सो फर्स्ट हमें लैम्बडा रो वैल्यू 0 पुट करिबा. ओके, x रो वैल्यू एठी कॉलम मैट्रिक्स जेमति हमें ऊपर कला x1 x2 x3 इक्वेट कर देला 0 सहित, एंड वी कैलकुलेट फॉर द वैल्यू ऑफ x1 x2 x3 कैलकुलेट करिबा. ओके, सो x1 रो वैल्यू देखिबो एठी 0 आसीबो, देन x2 plus x3 should be equal to 0, x3 plus x1 should be equal to 0. दैट मीन्स याकू जदि सॉल्व करूछु जेमति कहली x1 equal to 0 and x3 equal to minus x2. So within an arbitrary scale factor and an arbitrary sign or fetch factor, the eigenvector which is corresponding to the first root, that is lambda equal to 0, can be given by x1 equal to
x1 x2 x3 और या को आम हिसाब से लिखि परिबा व्हिच इज 0 देन k minus k रो वैल्यू आम आर्बिट्रेरली जे कोनोसी वैल्यू नै परिबा ओके now if the eigenvectors are to be normalized to unity ताले यार magnitude को आम इक्वेट करबा 1 सहित ओके सो दिस शुड बी इक्वल टू 1 ताले k रो वैल्यू देखो आसीगला 1/√2 ऊपरे एटा को डायरेक्टली लिखि दिथिला केमती बाहरुची k रो वैल्यू देखो एठी आम बुझिला ओके so that the normalized eigenvector of the matrix corresponding to lambda equal to 0 आम पाइगला तापरे सेकंड रूट होची lambda equal to 1 ताले accordingly this is our eigenvalue equation याको again further solve करिबा x2 और x3 देखिबो 0 आसीबो ओके सो हम लिखि परिबा x2 to be equal to 1 0 0 suitable eigenvector पाइगला हमें thus normalized eigenvector of the matrix corresponding to lambda equal to 1 is x2 equal to 1 0 0 then finally the third root that is lambda equal to 2 for which this is our eigenvalue equation याको अगेन सॉल्व करिबा x1 रो वैल्यू 0 आसीबो किंतु x2 और x3 दुरा जाको समान रहिबो अगेन वी डू द सेम थिंग ओके आर्बिट्ररी रहउची सो 0 k k ए हिसाब रे लिखिला देन नॉर्मलाइज करिबा यूनिटी सहित k रो वैल्यू देखिबो 1/√2 आसीबो सो फाइनली द नॉर्मलाइज्ड आइगेनवेक्टर x3 equal to 0 1/√2 1/√2 okay so this is the three eigenvectors which are normalized okay of the given matrix A. Then moving on to the next problem, example number 34. Find the eigenvalues and the normalized eigenvectors of the following matrix. Okay, this is our matrix. Same जिनस आम apply करिबा. So एटा हला हमर जो characteristic equation a minus lambda I equate करिबा 0 सहित lambda रो value बाहर करिबा देखिबा एठी lambda रो value 235 डिस्टिंक्ट वैल्यू आछी ओके ताले आइजेन वेक्टर पाइबा पई आमे नेबा आइजेन वैल्यू इक्वेशन a minus lambda I into x equal to 0 put the value of first root that is lambda equal to 2 solve करिवो देखिवो x3 रो वैल्यू 0 आसीबो x2 equal to minus x1 ताले अगेन आर्बिट्ररी नै परिबा एठी k minus k 0 नॉर्मलाइज्ड करले k रो वैल्यू 1/√2 आसीबो ओके so accordingly x1 हो गला 1/√2 minus 1/√2 0 तापर सेकंड रूट lambda equal to 3 याकू सॉल्व करिबा आइजेन वैल्यू इक्वेशन पुट करी की देन एठी देखिबो x3 आउ x2 ए दुइटा 0 आसिला ओके तापर एठी हमें x1 को आर्बिट्ररी नै परिबा सो k 0 0 आ जदी नॉर्मलाइज करछु k रो वैल्यू ऑब्वियसली 1 ही हबो ओके सो x2 हो गला 1 0 0 and finally for the third root that is lambda equal to 5 this is our eigenvalue equation we solve it एठी चेक करिवो x2 equal to 2x1 x3 equal to minus x1 आसीबो ओके सो आइजेन फंक्शन जोटा आसिला बा आइजेन वेक्टर can be written as k 2k minus k ओके नॉर्मलाइज करिबा माने यार मैग्नीट्यूड को इक्वेट करिबा 1 सहित सो k रो वैल्यू 1/√6 आसीबो ओके अकॉर्डिंगली हमें लिखि देला एठी x3 1/√6 2/√6 and minus 1/√6 okay then finally example number 35 एठी मैट्रिक्स टा 2 क्रॉस 2 किंतु एटा sin और cos ट्रिग्नोमेट्रिक देइछि cos थीटा minus sin थीटा cos थीटा यार आइजेन वैल्यू आउ आइजेन वेक्टर पचारछि सो फर्स्ट आम लिखा जमी करथला कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a minus lambda I डिटरमिनेंट इक्वेट करबा 0 सहित lambda रो वैल्यू बाहर करबा को चेष्टा करबा एठी गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसीबो याकू सॉल्व करले lambda रो वैल्यू e to the power plus or minus I theta दुईटा वैल्यू आसिला ओके lambda 1 lambda 2 ओके ताले आइजेन वेक्टर एबे बाहर करबा बाय यूजिंग द आइजेन वैल्यू इक्वेशन that is a minus lambda I x equal to 0 okay एठी x इगला x1 x2 because 2 cross 2 matrix देछि we solve it to find the value of x1 and x2 by putting the first value that is lambda equal to or lambda 1 equal to e to the power I theta ताले x2 equal to minus I x1 आसीबो so
करस्पोंडिंग आइजेन वेक्टर होगला एठी x1 माइनस आई x1 और x1 को बाहर को जदि आमे आनी आसीबा ताले 1 minus I, or simply you can write as 1 minus I. Okay, and using lambda equal to e to the power minus I theta, we'll get from equation 2 x2 equal to I x1 ताले यारो value finally आसीबो x1 1I or simply 1I ताले required eigenvectors हेगला 1 minus I how 1I. Okay, so this is all about the eigenvalue, eigenvectors and the secular or characteristic equation for the case of a matrix. Thank you.